3 hours 20 मिनट्स का जो रन टाइम है ना, उसमें से आई थिंक 3 hours अननेसेसरी थे। मेरे को मूवी समझा नहीं ऐसा लगता है। It has set the wrong expectation giving the teaser. डबल एक्स के बारे में बात करते हैं, तेरे को पसंद आया था डबल एक्स? टू बी ऑनेस्ट मेरे को मूवी समझा नहीं ऐसा लगता है। ट्रू मेरे को भी नहीं समझा। Because he was trying something else, and that whole bit of cinema never dies felt very forced. कोहेसिव नहीं था मूवी, ऐसा था मेरे को। If you saw his interview, वो बोलता है कि it took 10 years. नहीं 9 years। 9 years, हाँ, almost 10 year ना, मतलब हाँ, it took him 10 years to come up with the elephant angle And he and only everything. came with हाँ वही तो। Not even necessary, वो contribute भी नहीं किया. If you go with the storyline, वो देख twist था in the middle where he shows कि he was the person who does the murders in the college and he has been framed for it. That was तो हाँ, that देखो was पसंद आया था वो? nice. I mean, I was expecting it. मेरे को तो वो तो ऐसा contrived लगा, but मेरे को वो समझ गया था, like as it went on now, it became predictable, and also the 30 minutes alone is really good. Like, starting it's की end, technically brilliant and end. It's technically very solid. But yep, then when I watch it whole, like as a as a whole whole movie, film, yeah. काफी अलग है दोनों का ग्राफ। It's like those two are two different movies, ऐसा लगता है। वो क्यों आइशू माल है क्या कि कैरेक्टर्स का एक प्रॉपर गोल नहीं था कि दे वांटेड टू परफॉर्म अ सर्टेन थिंग, Or else we weren't aware of that goal. हाँ वो हो सकता है। ऑल्सो अ लॉट ऑफ थिंग्स वर वेरी रूटेड इन तमिल, सो दैट्स व्हाई वी वुड हैव And मिस्ड अ फ्यू थिंग्स। अरे that's what I thought। ये मैं सोचा भाई, like I don't know about that cultural, like जो भी वो region specific politics है वो नहीं पता होगा, so maybe we are getting lost there, but then movie also was very lethargic। second half में 1 hour into the movie I was genuinely tired because हाँ इवन music mediocre था, हाँ but the cinematography was very beautiful। मतलब एक frame it was really good, lighting भी काफी अच्छा था। कार्तिक सुब्बराज का है वो तो, his way of briefing things, Trademark। but वही रीड कर रहा Where था do कि you rank it? Will you suggest नो आई वुडंट, it? अगर इफ यू आर स्टार्टिंग कार्तिक सुब्बराज का वर्क तो यू शुड स्टार्ट विद ईदर पिज्जा या फिर जिगरतंडा का फर्स्ट वाला। दिस I आई mean, वुडंट शो इट टू अ this, पर्सन फॉर स्टार्टिंग। and what made me even more confused was like it got way more traction when it came on like हाँ Netflix and लोगों ने देखना ट्रू। चालू किया। I felt like मैं दंग हो गया, like सी मुझे सी क्या नहीं समझा। a little part of audience goes with the vibe कि लोगों को पसंद आया, why I want to like it। हाँ सिनेफाइल वाला भी है ना थोड़ा इसमें, like that love for cinema वाला, and I think that played a huge part in हाँ getting that audience। वैसा भी वो मेटा भाई फिल्म्स साहब, का एक्सप्लॉइटेशन अभी फिल्म फिलहाल। एक्सप्लोरेशन, या आई फील दैट। हाँ, देन आई रियलाइज, लाइक 3-4 दिन के बाद रियलाइज किया मैंने कि एक जस्ट बिकॉज इट्स अ कमेंट्री ऑन पॉलिटिक्स एंड फिल्म और एंड इट्स मेन स्ट्रीम। But now that you put it, developing a character using film, so this reminds me of Sanju. Like with Sanju's character, he whitewashes it, saying that he's not a criminal. Gave me a Bro, vibe about it. that was, I can see the similarities, yeah, but crazy। but then he does it for a noble cause that I can understand. ये मैं मानता हूँ ये वाले part में। As a Who whole, जिगरतंडा का जो Subaraj, first, right? but if you see the first part जिगरतंडा का, they work on the same tone. And what happened is, I think it has set the wrong expectation giving the teaser. He's saying कि ऐसा है See, teaser। expectation जाने दे, I don't think so। See, मैं But वही then, बोल रहा हूँ ना, but like then now the era of social media where you sell the film based on marketing, major chunk of your money see, goes to it. wait, लोग भी बोलते हैं कि एक्सपेक्टेशन बढ़ के लेके गया। हाँ I think when you getting to the theater, and if you want to enjoy that movie, then I don't think so that's going to affect नहीं that ऐसा much। ऐसा ऐसा That's ऐसा what नहीं। I feel। If you consider that way तो फिर अगर तूने एनिमल देखा रहेगा। Okay, but then मैं मेरा बताता हूँ। हाँ मैं कुछ 2 weeks बाद देखा, ठीक है, पूरा हाइप किया, सब नेगेटिव रिव्यू पढ़ लिया, लाइक काफी क्या बोलता है डाइसी, मिक्स रिव्यू मिला था उसके बाद गया था यार। नेक्स्ट रिव्यू, सो गया। मेरे को अभी भी ट्रेलर याद था, एक्साइटेड था मैं। हाँ देखा ना, ट्रेलर मैं याद था ना सोचा, देखो, फिर वो हिसाब से तो ऐसा थोड़ी है कि आई मीन, you forgot about the trailer and then you went in। सी बट आई हैव रेड रिव्यूज ना, तब तक मुझे एक आइडिया तो मिल गया था कि मूवी इज लाइक वेरी पोलराइजिंग। हाँ मैं मेरे दिमाग में वो भी तो रहेगा ना थोड़ा। हाँ but then the trailer was not that misleading animal का। It told you what it actually, it had the film in it।
If you say the best scenes of the film, and Hmm. taking them out of context and putting them, that made them best. If you put them in the context of the film, so it wasn't It that. doesn't तो fit in. देखेगा तो हाँ, there was this review जहाँ आंटी बाहर आती है and then she's asking the journalist कि ये पक्का आएगा ना करके, तो बोलता है हाँ, तो बोलती है एनिमल इज सो बैड इवन एनिमल्स वोंट वॉच इट करके। हाँ, I saw that. I saw that. Funny था भाई काफी. But मैं there's a मैं क्यों बोल problem. रहा था लाइक एनिमल का क्यों प्रॉब्लम, आई वेंट इन knowing कि how the trailer, how the film is, but then I knew Sandeep Reddy Vanga's films earlier, the writing material and everything. So I was Exactly my expecting, point. Exactly. हाँ, तो मैं I भी was वही expecting लेके गया था ना. singular क्या बोलते हैं गोल रहेगा and he'll be trying to achieve it while he goes through a character transformation. I was expecting it, but then a lot of unnecessary chunks were put in for the shock value. तो मेरे को लगता है 3 hours 20 minutes का जो रन टाइम है ना, उसमें से आई थिंक 3 hours अननेसेसरी थे. If you come to that, I'll say only the trailer cut was worth it. जितना कम बात करें उतना बेटर है. This animal should be put down. I think we as a society collectively should forget about Animal as a movie that released this year. I reject to be a social animal now. Like इससे will divert now. Animal को ज्यादा attention नहीं हाँ, देते. अभी कीड़ा कोला से क्या प्रॉब्लम था तेरा? हाँ मैं बोलता हूँ क्या प्रॉब्लम था. If you look at the storyline, it was okay as in Paper thing. ठीक I था, agree. हाँ, Paper ठीक thing. है. And there was a scene कि वहाँ he tries to ऐसा forcefully put in the philosophy. If you see वो गाड़ी में जाता रहता है कैब में and he says अरे लाइफ అంటే ఇది కాదురా freedom ఉండాలి. But If you see but why नहीं force नहीं है वो? क्यों force लगा तेरे so को? see a theme, when you write a theme in the film, so there are wants and needs for a character, right? So need is usually aligned with the theme. So अरे the but theme, wait. Wants and needs गया बाढ़ में अभी. अच्छा, I'm saying movie was about in some way coming of age of a guy हाँ, who just got out of jail, killer, murderer, कुछ भी बोल. हम्म, तो पूरा मूवी देखे हाँ it's about नायडू ओनली. बट हम्म, उसके बाजू बाजू में मूवी चलता है, ठीक है. see if नायडू इज द मेन कैरेक्टर हाँ, एंड उसके थ्रू ही हम मूवी पूरा फॉलो कर रहे हैं. if I dub you a Guy Ritchie film in Telangana accent, what would be the difference between that and this? अरे नहीं, मैं बोलूंगा इट हैड दैट तरुण भास्कर फ्लेवर, बट आ, देन ही टुक गाय रिची का थोड़ा इंस्पिरेशन, थोड़ा वेस एंडरसन का, आई एम सॉरी वेस नहीं, एडगर राइट का, दैट कट्स. आई थिंक इट वर्क फॉर मी फॉर, आई एम बीइंग बायस्ड. see the only thing worked for me was the dialogue and the humor. What happens is usually तरुण भास्कर's स्ट्रक्चर जो रहता है स्टोरी का इज रियली वेल डन. तो ई नगरान की में देखेगा या फिर पहली चुपड़े में देखेगा तो देयर इज ही इज प्रॉपर, हाँ, 2 movies राइटिंग वाइज old इज अ भाई, मास्टर. 2.5 साइन में पकड़ेगा तो हाँ, निसाइन ऑल दैट you स्टफ भी है. can't you can't really bring those in to just बट देन like इन ऑल structure दो इसके स्टफ बारे में बताना. I क्या think क्या he is uh, somewhat trying to make मतलब हर एक मूवी से वो एक कुछ नया ला रहा है. अच्छा, इज गोइंग द स्पीलबर्ग वे, ट्राइंग टू ब्रेक जॉनर्स, ट्राइंग एवरी जॉनर, एग्जैक्टली ही डजंट वांट ट्राइंग. टू बी उसका पिजन नेक्स्ट होल्ड. अलग ही होने वाला है ना, वो बोल रहा है नेक्स्ट मैं अभी प्रॉपर कमर्शियल मूवी बनाऊंगा नेक्स्ट. बट सो व्हाई इट डिडंट वर्क इज कि ही स्टार्टेड विद कीड़ा कोला. कीड़ा कोला का मेरे को तो एक तो मूवी में एसेंस नहीं समझा, जरूरत क्या था. इवन द एंडिंग वाज अ लिटिल हैपहजार्ड कि वो पिला देता है हाँ पसार अंकल. आई एग्री. हाँ, वो था. एंड क्या था कि हाँ वो फिलोसफी फोर्स था. तू कितना ही बोल ले कि अचानक से डाल दिया. इफ यू हैड टीज्ड इन द स्टार्ट की मतलब ही इज इन द क्लचेस ऑफ जॉब एंड एवरीथिंग एंड इज ट्राइंग टू गेन फ्रीडम, तो आई वुड हैव अग्रीड कि हाँ दिस गाय केम इन एंड ही गिव समथिंग, तो द हीरो रियलाइज्ड कि हाँ मैं, तो दैट वुड हैव बीन सैटिस्फाइंग. अचानक से तू बस अपना फिलोसफी डाल रहा है बीच में अननेसेसरली. ही जस्ट सिटिंग देयर, नथिंग अर्क्ड हिम, खुद से वो चालू कर रहा है बताना. ठीक है, तो टू वो ईच इज वन आई थिंक. हाँ हाँ. मेरे एंड को इवन फोर्स वो नहीं लगा. रघुराम, हाँ, so even his character was मतलब so much potential but then it was wasted ऐसे ही. प्लॉट डिवाइस हाँ, कोई प्रॉब्लम मतलब डिवाइस ही था वो. such a interesting character वो, and such an क्या quirky role to the key. He's a PR manager for a company and then he's also this guy, crazy psychotic. बहुत interesting था वो quirk but then he completely underutilized था. Only वो नागल पंचमी वाला बंदा विष्णु रहता है. हाँ हाँ, विष्णु that and या तरुण फिर भास्कर का जो केमिस्ट्री रहता है, that's एकदम top notch. क्रेजी. Even Brahmanandam and his side of the area was very underutilized. like क्या टेक किया द उधर. कार. हाँ होता है ऐसे, हाँ वो ये वाला देयर पार्ट आर था. सीक्वेंसेस. यार वही तो बोल रहा था, वही ह्यूमर वर्क किया बट देन बस ह्यूमर के लिए आई रेटेड द फिल्म. बाकी सब एरिया में डिडंट वर्क फॉर मी बट टेक्निकली इट वाज वेरी एप्ट. तो देखिएगा तो बहुत स्मार्ट था उसका फिल्म. यप. इवन दैट पार्ट जहाँ वो अब्यूज करता रहता है बीच में वो गाना बजा देता है ईयरफोन्स में. ये वो बेस्ट हाँ बेस्ट सीन हाँ. देखने का.
लाइक अभी तू मैड को देख के 3 स्टार दिया, मैं मैड को देख के 2 स्टार देने का सोचा, एक्सेप्ट फॉर लाइक हार्डली 10 minutes, इट वाज जस्ट चल रहा था, दैट्स इट, चल दैट्स रहा माय था एज इन, प्रॉब्लम। बस रन टाइम बढ़ रहा था और कुछ नहीं। हाँ तू सही कह रहा है कि स्टोरी लाइन वो जो था बहुत पेपर थिन था कि आई कॉलेज। मीन नहीं था स्टोरी, आई मीन हाँ दे स्टोरी, ट्राइड दे दैट ब्रॉट इन जाति द स्टोरी। रत्नालु थिंग। हाँ हाँ। जाति रत्नालु से याद आया उसका नेक्स्ट जो था प्रिंस वेंचर। प्रॉब्लम विद दोस काइंड ऑफ मूवीज इज हम्म they get lost in like translation, so the intended punchline जो है, हम्म it doesn't come through with subtitles. सही है। So these kind of movies are very regional ट्रू, specific. लाइक क्या I बोला वो। enjoyed Mad more than Animal.